So, hello, neat parents. In today's class, we will discuss about diversity in the living world. That's a unit 1 of class 11th NCERT. Chapter number 1. In this unit 1, we deal with 4 chapters. That's the first chapter is the living world. Second is biological classification. Third chapter is plant kingdom. And fourth chapter is animal kingdom. Okay. So let us start. Diversity in the living world. Okay. Diversity in the living world. So basically, we will cover line to line of NCERT. Biology is the life science, is the science of life, forms and living processes. बायोलॉजी क्या है? तो यहाँ पे ठीक से देखो, NCERT ने कहा है बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ. लाइफ का साइंस है और उसके लिविंग प्रोसेसेस जो भी होते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्राइज करता है अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अर्ली मैन कुड ईजीली परसीव. जो लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्राइजेस करता है अमेजिंग डाइवर्सिटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और अर्ली मैन कुड इजीली परसीव करता है द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो इनएनिमेट मैटर है, जो एनिमल नहीं है, वैसे मैटर को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी डिफ्रेंशिएट करता है. अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर. विंड और इनएनिमेट मैटर कौन कौन से हैं? तो विंड है, सी है, फायर है, एट्सेट्रा. ये हमारे इनएनिमेट मैटर्स हैं. All such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human being, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. ये लिमिटेड प्रोग्रेस था बायोलॉजिकल नॉलेज में. ठीक है. फिर इधर सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स brought in out of necessity detailed systems of identification. इसमें क्या क्या है? तो हम लोग डील करता है ब्राउट ऑफ नेसेसिटी से डिटेल सिस्टम. तो इसमें क्या क्या है हमारे, क्या क्या किससे किससे डील करते हैं, तो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ये सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन है जिससे हम नेसेसिटी को देखते हैं और डिटेल्ड सिस्टम को देखते हैं. कौन कौन से है? तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज
was the recognition of the sharing of similarities among living organism both horizontally and vertically. तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग कैसा होता है, शेयरिंग सिमिलैरिटीज एमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है. दैट ऑल पेरेंट डे living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and lead to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspectives. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनिमल्स का जो है क्लासिफिकेशन वो कैसे होता है वो देखेंगे, और प्लांट के जो भी टैक्सोनॉमिस है उसको हम लोग देखेंगे. ये है अर्नस्ट मायर, ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. जो अर्नस्ट मायर है इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. कौन है, तो हमारे फेवरेट अर्नस्ट मायर है, वो डार्विन है 20th सेंचुरी के. अब इस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग दो चीज़ों को डील करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम लोग देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम लोग इधर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को. ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पहले क्या था कि थोड़ा सा एलोबरेटेड था, बट अब क्या हुआ कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया नीट वालों ने, इसीलिए ये चैप्टर्स थोड़ा शॉर्ट हो गया है. देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में एंड हो चुका है. जो भी पार्ट था हर्बेरियम वाला, टैक्सोनॉमी की वाला, वो पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया है. तो ये हमारी एनसीईआरटी थोड़ी शॉर्ट तो ज़रूर हो गई है, बट काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो गए हैं इन चैप्टर्स के भी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं. हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप of amazing types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि
लिविंग और मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? माउंटेन्स, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। जो हॉट स्प्रिंग है ये सारे हमें स्पीचलेस कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग horse and migrating birds. The valley of flowers or the attacking shark evoke awe and a deep sense of wonder. फिर है the ecological conflicts and cooperation among members of a population and among a population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflected on what indeed is life. The question has two implicit question within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक है टेक्निकल वन है जिसमें सीख करता है, आंसर पूछता है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। लिविंग कैसे नॉन लिविंग को अपोज करता है फर्स्ट। और सेकंड है एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट तो था टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा था कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड सेकंड है उसमें पूछ रहा है फिलोसफिकल वन है, ये सीख कर रहा है कि आंसर टू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये दो क्वेश्चन अराउज हुए थे। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसी ने नहीं, कोई भी नहीं दे सकता है कि लाइफ का पर्पस क्या है।
सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है, उसे हम लोग अभी देखते हैं।